होगा तो सेंड आया कि नहीं अभी? ये रूम तो लॉक है, इनके पास ईमेल गया नहीं शायद। नहीं, चूंकि लास्ट टाइम ये थे नहीं हमारे साथ, तो इसलिए शायद नहीं भेजा होगा। अच्छा, ओके। आज हमें जी शुरू कर सकते हैं आप? जी जी सर, जी गुड तो मॉर्निंग। आप इंट्रोड्यूस कराइए जी फिर जी से। सर, बिल्कुल सर। So, a very warm good morning to everyone present in the meeting. We welcome all the faculty from the economist discipline of IGNO, Professor Narayan Prasad sir, Professor K. Barik sir, and Dr. Vijeta Banwari in today online interaction with the MA Economics students on the different aspects related to the projects component of the MA Economics program. ब्रॉडली जो आज का जो डिस्कशंस में हम लोग प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे एंड वट एवर द डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड फैकल्टी मेंबर्स हैं फ्रॉम द इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन, सो दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंसेस हाउ टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द डिफरेंट स्पेशलाइजेशन इन द एमए इकोनॉमिक्स सेकंड ईयर, and subsequently we will take up the different queries of the students related to the project component or any other components related to their program of study. So with this, I again welcome all the three distinguished academicians in the today online interaction with our students under RC Delhi 2. I also welcome my colleague Dr. Rahman, Dr. Shaini, Dr. Meena, and Dr. Rita in today interaction. And I hope that all these interaction will help our students a lot in the completion of the project component of the MA Economics program. So with this, I invite Professor Narayan Prasad for the initial remark and subsequently the other faculty members also to inform on the project component under the MA Economics program. Thank you, Dr. Srivastav. Actually, I will give a brief about why project has been included in this MA Economics program and how to do the project work. These are the two critical issues. Putting the project work has a purpose. It is not a casual thing that any other like course somebody can take project and project is something very attractive thing, not like that. See, I think every student is hearing me. So, because economics is not a subject just like for sake of doing MA, like other disciplines. It has applications. It connects with the real life situation. Now the question is that when we have studied economic theory and techniques, not in one paper, rather three papers. One is MEC, now the course code is 203, MEC 109, and MECE 001. It is going to be recoded MECE 101 and MEC 102. So a lot of techniques have been given, techniques of data collection as well as techniques of data analysis. You have studied theory in a very detailed manner, both micro as well as macro. Now the natural question arises, why should we see it is has been prescribed just for getting the degree, or it has some connection with the real life situation? So whatever you have learned in these courses, particularly in theory and as well as in these three courses which I have referred to, how these things can be applied in real life situation. Unless that chance is given to the students, they find it difficult to apply. So the intention of the project work is that person should not only know the theory, not only know the techniques, rather he should also know how to apply those techniques, how to analyze the economic events, situation and development which are taking place in day-to-day life. This is the whole purpose. This is basically application-oriented paper. But we have a large heterogeneous categories of the students. Some are just to somehow get the degree. Some are intending to start their career as a profession, want to go to research.
some are working in the public sector undertakings. So our intention was those students who are really to start a professional career as an economist or as a researcher or as a good teacher, those students should be given the opportunity to do the project work. Now, our experience has shown that many students just simply take the project because they have to write one optional paper. They even do not bother whether they have passed out the MEC 109 course or econometrics course or quantitative methods course, and just for the sake of the somehow or other go to the shop, take the proposal and copy somehow the report and they submit it here. And the more ironical or pathetic situation is that at the study centers, counselors simply put their signature and they do not see what has been written. Surprisingly, I would like to add one supervisor. He has signed on both the project proposals and they are copied each other. And later on, I found that that particular proposal has even more students are submitting and the same supervisor putting the signature. So this is the thing, somehow or other they have to pass the degree. My younger request to such students is that project work is not compulsory paper. It is an optional paper in earlier course, earlier program means till January 2023. There are several options available for the students and student can opt any other course like any several courses and they should not go for the project work. Such non-serious students, we do not expect that they should opt the project work MECP 101 course because they will be in problem because here if the proposal will come, we will reject it. And then second time, third time, fourth time, we continuously reject because we have some expectation that at least minimum level should be this. So this is the thing. Now, having said that, I come to the main issue. And the main issue is that what are the stages involved in the project work? There are several stages. The first stage arises that once the students opt this course in their re-registration form, he has to submit the project proposal. Project proposal is submitted to the faculty in the economics department, either program coordinator or course coordinator. This is one thing. They should not send it to the registrar SRT. Several times it has been observed that students, without going through the project guide, they submit the proposal and then they are in trouble, or they submit to the regional center. Some students even submit to the study center, and the project report doesn't come to us. And they say, sir, we have sent the proposal and we have not get the clearance. So one thing, it should be noted carefully by all the students that project proposal is to be submitted to the Faculty of Economics, IGNOU, Maidangadi. Not any other place. It has nothing to do with the study center, nothing to do with the regional center, nothing to do with the registrar SRT. The only thing is that if they find it difficult to get the supervisor, second stage is the identification of the supervisor, from where they will get the supervisor. They should approach to the coordinator of the study center. All the approved academic councils are also the approved guide also. Apart from that, if a student doesn't find any supervisor from among the academic councils, we have also given freedom. Any person who is actively involved in the research, either in any research institutions or some holding some research position in any institution, they are also eligible to be supervisor. But he should be in economics or even in management or in commerce. There is no hard and fast, but he should be actively involved in the research activity. Supervisor, we have some certain expectation from the supervisor. He should help him in identification of the topic and also what kind of data he will require and how he should do the project work. There are several functions which are expected from the supervisor. Now the third thing is that once the project proposal has been approved, then the student can undertake the project work and he has to submit the project report
to registrar SED, not to the faculty. The purpose is that evaluation is complete under the control of the registrar evaluation division SED. So it is their job to get it evaluated either from the faculty or from external evaluator or from the internal evaluator. So these are certain procedural parts. Procedural parts: to whom the project proposal is to be submitted, to the faculty, from where the academic guide has to be taken, from the study center. If they face any difficulty, they should approach to the regional center, and regional center can help them from where they can get the supervisor. Not the faculty, because faculty is not involved in the field work. They do not know who are the supervisors available at the study center. So many students complain that we are not getting any supervisor. In case facing the difficulty at the study center's end, they should approach to the regional center. They are the right kind of the person who will help them. The third is that evaluation report has to be submitted to the registrar SED, Registrar Students Evaluation Division. After this thing, now I come to how to prepare the project proposal. Our role to guide you. Although we have, in a very systematically manner, given all this information how to prepare the synopsis, the proposal, there is a project guide under the course code MECP 101. Now, I come to there are 5-6 steps, 5-6 points under which a student is expected to prepare the synopsis, the proposal. The first important thing is identification of the topic. Generally, all the students should know it is neither MPhil work or PhD work or research work, as I mentioned earlier. So, the project proposal need to be made or to be identified from a particular area. Many students have some interest in agriculture, some have industry, some have labor, some have development, some have insurance, some have environment. So many areas are there. So first of all, he should think from which area he is comfortable. And maybe comfortable or maybe some area of interest. Suppose somebody is having in rural area some agriculture. So any agriculture, there are various areas. For example, in agriculture, different kinds of government is giving them now subsidy in cash subsidy. So how that is being used by the farmers? 6,000 per annum or 2,000 per quarter. Something government is giving to the small and marginal farmers, so they can approach the persons how it is being used. Is it being used just simply for the consumption purposes or some cultivation purposes or in buying imports? So what are its impact? Can be identified. Similar way in rural areas, you might have observed, students might have observed many times the rural persons, unemployed persons move to the cities, to the urban areas for in search of the work. So who are those people who move from rural to urban areas? Why they move? What kind of advantage they have during that period? How their family, because if some household or some head of the household moves to the urban areas in search of employment, who will take care of their families? And what are the impacts? So these are the certain research issues, research questions which can be thought of for project work. Now, it is not, I have already mentioned, it is not a MPhil or PhD work. So a small size of sample, sometime not more than 100 under any circumstances, because time duration on just like other courses, only 180 hours are left with the student to do the project work. It is not a 1 year work or 2 years work. Many students very ambitious and they write the things like that as if it is an MPhil work. So small things, identification of the project
See, what are the research questions? Basically, once the topic has been identified, he has to ask the questions. Just I have raised certain questions. Somebody is working in any industry, he may find out what kind of inputs, what kind of output is there. Is there some kind of relationship between inputs and output? What kind of marketing strategy is being used? What kind of costing is there? So because we have studied the cost, various types of cost, so how to work out that cost. So data, if somebody, my suggestion is that those who are working either in industry or insurance or anywhere else, it is fit for taking up the project work because they can have the insight about the functioning of that particular organizations. Otherwise, though, it may be difficult. Similarly, somebody is working in the industry, or for example, we have given several techniques in our course material. There may be different classes of people in rural areas. Some may be very rich, some may be very poor, some may be middle class. So, how to measure the inequality? We have the techniques in our course material. So, and what are its impact? You can divide the whole two groups. You can take the two groups of the people. Some are whose income is very high, some whose income is very low, and you can measure, you can collect the income level and then apply the technique to measure the inequality. So many topics are there in this way. Now the thing is that, then third is that you have finalized the research questions, then objectives. Objectives should be very limited, either two or three objects, not five or six or seven or eight. You put the projects, the objectives like this is an MPhil synopsis. And then what kind of data will you require? This will be determined by what kind of research questions you have, what kind of objectives you have. So you, what kinds of information you will require. Whether data may be primary source, data may be secondary source. So secondary source of data, we have one block on research methods in economics in block 6, and their title is Database of Indian Economy. All kinds of data, secondary source of data, we have given their links also. Even in project guide also, we have given the links. You can very easily access the secondary source of data through internet. Now technology is there. So it will depend on what kind of data you require. So accordingly, you can go to that particular link and you can see the data. So far as the primary data is concerned, primary data one has to collect oneself. So what are the methods to collect the data, and what are the tools of data collection? And this, even in our MEC 109, there is unit 7 you can go through before the data collection techniques also. So that is why first students should complete the course MEC 109. It is a compulsory course. MEC 103 is a compulsory course. Although econometrics is an optional course, but econometrics, some sort of elementary things, applied things rather, we have also given in MEC 109. I think block 3 unit number I do not recollect, but unit 3 basically quantity techniques 1, and course block 4 also quantity techniques 2. So if you will go through those techniques, that is why I am insisting again and again that first one should complete the course, then only he will be able to uh, uh, to identify the particular kind of data technique, data collection technique, and data analysis techniques. So this, in the proposal you have to mention what kind of variables you will use and how that information you will collect either through primary sources or secondary sources. Then what are your expected outcome and what are the limitations of the project. So in these 5 6 points you have to submit the synopsis. It is a basically a tentative planned work. So while identification of the topic and the framing of the synopsis, you can discuss with your fellow students, you can discuss with the teacher, you can
see the existing literature also. Nowadays technology is there, so enough things are available on the Google network also. So these are the basically sources, but it should be a creative work, new type of work, not the copied work. And that will come when you observe in the field. Wherever you are working, you will find a lot of issues. For the issues can be labor, from development, as I mentioned, and uh, several things. Once the synopsis has been submitted to the faculty, we should wait for their clearance. Generally, if project has been well prepared, we approve it. Otherwise, we also submit our suggestions also, okay, where the project proposal is lacking, so that you can improve upon. This is a second or third chance. And then once the project has been approved, you can start the working. So far as many students ask what is the last date, see, in our system, there is nothing like last date. Our program has some minimum duration, our program has maximum duration. Minimum duration 2 years, maximum duration 4 years. So far, there is no last date. You can submit the project proposal at any point of time, but keep in mind the maximum duration of the 4 years. So at least you should submit the project proposal keeping with that timeline. Otherwise, once the maximum period is over and you have not submitted, you have not completed the project work, your registration will be basically expired. Important thing is that earlier till January to 2023, we have the earlier program structure which MEC. Now from July 2023, this program has been restructured, completely revised, and revised in many respects. It is in tune with the National Education Policy 2020. So the students who have already completed several courses of MEC program but have not been able to complete the full program by in the maximum duration of 4 years, there is no provision for re-registration for such cases, because in new program the credit load has been changed from 66 to 80 credits. Courses have been changed. Some area of specializations have been incorporated. This is I am telling because I was told that the students who have enrolled in July 2023 are also sitting here. So for such students, in there are four groups in that semester four. Semester three, every course is compulsory, but in semester four, you will find there are four groups: one group A, group B, group C, group, and D group. So those students who are willing to have specialization, they have to opt the courses from that particular specialized groups. But in those cases, there are two groups when project is compulsory, because 20 credits are there. Without project work, you will not be able to complete. But in other areas, you have the option, because where the credits are 24 or more than 24, in that situation, you have the option not to opt the project work. But particularly data analytics and environment resource economics, you have not option, but you have to opt the project work. Another thing is, in some areas project load is 6 credit, in some areas it is 4 credits. That you will get the full information from the project guide. Now the question arises, once the project proposal has been submitted and has been approved, how to do the project work. Basically, it is an execution part. Since the various things have already been cleared in your mind, you have to collect the data. Collection of the data may be through primary sources, secondary sources. The variables you have already identified, you find out whether I need the data from the primary source or secondary source. This is clear from your project proposal. If it is secondary source, you go once again from the our block 6 database of Indian economy, find out the appropriate link and try to collect the data from that source.
Sometimes data provided in the secondary source needs some adaptation, not in the way which you try to. So for that thing, you have to shortlist what kind of data will be sufficient, will be required for you. Once in the primary source data, basically, you have we have mentioned three methods. Either it can be sampling through, or through observation method, or through experimental method. You go through our unit 7, you will find the full details how to collect the data. Then what are the instruments? All the details have been provided. Most important part is data analysis. See, data analysis depend upon what kind of objectives you have identified, what kind of research questions are there. We have in project guide, in one particular section, a table has been given that what kind of data analysis techniques are there, where particular data technique has been provided in our course material, and for what purpose that particular technique will be used. For example, simply if descriptive data is there, simply survey method has been used and descriptive data, you are or some qualitative data is there, that center measures of center tendency. I have mentioned there because this is basically have been given in undergraduate level, so we have not included this technique in our MA level courses. But for your kind information, I would like to mention that even at the undergraduate level, our course is that data analysis, and that code is BECS, perhaps BECS 184. In that course material is already uploaded on the eGyan course. That is very useful course for the data analysis purpose. And important thing is that data analysis, we have also given there how to process data through Excel. And Excel is available on every computer. So data you can take help, and stepwise we have given the various steps how to use, by using the Excel you can analyze the data. Now how to present the data, even that system, all the details have been given there. And then if you want to measure some inequality, so inequality techniques we have also given in one unit, perhaps mostly in unit 13, because I have mentioned that you can use, because basic purpose is to learn how to use the techniques. So measures of inequality, absolute measures, relative measures, all those have been given there. Suppose if you want to compare or to find out relations between two things, two variables, correlation techniques is to be used, and that where it has been given we have mentioned. But if you want to know that change in one variable, how it is affecting the another variable by change in dependent or dependent variable, basically regression analysis, so that has also been given. Then if several variables you want to find out the estimation of how much change in one unit will change lead to the dependent variable, multiple correlation, multiple regression analysis, that has also been given there in that table. Suppose you want to know there are certain types of some social variables or economic variables. A bunch of variables are there, social as well as economic variables. You can find out the relations between them. Also, a particular technique, canonical correlation analysis, has been given. Suppose if you want to various, our course material is very rich so far as the techniques are concerned. It is not simply a quantitative methods, even qualitative methods have also been given. Suppose if you want to identify some development, whole development as a whole of a particular area, and you want to construct a development index called as a composite index, that has also been given in one unit. In the similar, you want to know the basically the from respondent side qualitative methods, emic method which we call perspectively,
content analysis has also been given, action research has also been given. The only thing is, first you should know the particular technique, then you should know I can use this. Major point is that you should be creative in thinking what kind of questions you have in your mind and how to address those questions. How to address, then you have to go into the technique. But what kind of questions you have, that cannot be guided from this end. One should have the curiosity to know it. If you closely observe in the field, maybe area may be anything, then naturally questions will arise. Questions, I have also mentioned, questions may be in form of what, how, why. If question is why, naturally some explanation is needed. Explanation can be in terms of cause and effect relationship. If question is how, then naturally some processes are involved to how to capture that particular process. Suppose the question is what, you have to know the facts, because we are not expecting very high kind of research at this end, but some description, even description of an event or a situation in a systematic manner, that is also kind of project work we can take up. Now then, once the analysis work has been done, another point arises how to write the report, because you have to write the report. So several steps have also been given, that how the chapters have been to framed very category. My simple request for all the students is, before taking up the project work, they should carefully read our project guide. If you will go to a shop and get a project proposal ready made and submit the report, please keep in mind it is certainly going to be rejected. And now onwards from this in new program, we will also give the link that your information that your project proposal and the project report is to be put under plagiarism check. Obviously, immediately it will be caught up. You will be in trouble. So don't take that risk that copying will serve your purpose. In the no circumstances, we are very serious about the thing. If project is to be done, it should need to be done in letter and spirit. It is not just simply one course has to be opted and then that should not happen there. So we will mention this in our, we are devising our project guide also, that the project work, and another important component, we will also include Viva. During the Viva, we will find out whether you have done the project work or not. So there will be very least scope that by copying the project or by purchasing the project from a shop, your work will be done. Certainly it will not be done. And then once the project report is written, project report, many students ask how much size. It is not a MPhil dissertation. It is simply on time limit is there. You are also not given the 1 year time exclusive for this course. This course is like any other course, only 180 hours total. So our expectation is that around 15,000 to 20,000 words, means not more than 40 to 50 pages. This is maximum limit, project report size. And then you have to give the proper references also. We have also given how, because in any, this is a some kind of research activity, frankly speaking. Although we are not giving the title, but it is a kind of research activity in a limited sense. So you have to follow some research rules. Some research rules means when you are using some resources, you have to give the proper references. So how to give the references, that also we have mentioned in our project guide. There is a system, there is a procedure how to give the citations and how to give the references. All these details have also been provided in our project guide. So having said that, I think I will stop here
And I would like to request if my colleagues wants to add something. My other two colleagues are also on the line, and thereafter we will invite the questions from the students. I will stop here. Thank you. Mm, thank you, Professor Prasad. In fact, it was very concise and you have covered almost all the points. I will not have anything to supplement actually. Rather, I will summarize or I will highlight some of the basic issues or some of the basic points. Okay. The first thing that you have to take care of is that there are two components here. Okay. Before that, those students who have taken admission or who have registered in the course MECP 101, only they have to submit the project reports, not all MEC students. Keep in mind this one. Okay. So automatically by taking admission in MEC doesn't entitle you or doesn't require you to submit a project report. Only in a second year, if you have registered for MECP 101, then only you are required to submit a project report. In project report, there are two components. One, first you have to submit a synopsis of the project. That is what you want to do. It will be a very brief summary or synopsis of your total project report actually, what you plan to do, how you plan to do, what are your objectives, okay, what is your methodology. So this should be about 2 to 3 or 4 pages only. You don't have to submit the complete report in the initial instance. This you have to submit to the School of Social Sciences, to the program coordinator of MA Economics program. Okay. So once your proposal or synopsis gets approved, because we in the social sciences with the faculty members go through each and every proposal, we point out the limitations, we try to see that whether it is feasible to carry out such a project report, or is it too big, too small. Okay, so all this, and we give all comments on that actually. We give some critical input, some valuable suggestions for that. Okay, so first thing that you have to do is submit the synopsis to the faculty, to the School of Social Sciences. Once you get approval on your synopsis, then only you have to write the project report and submit the project report to the Registrar Evaluation Division. Okay, so the project report you don't have to submit to the faculty. That will go to the evaluation for evaluation purposes, for examination purposes. Okay, so keep this thing in mind. Professor Prasad brought out the steps. What should be the component of a project report, and what should be the component of a project, what are different aspects that you have to take care of, where to get this that materials, all these things he deliberated. So I don't have anything else to submit. As and when some questions come, we'll submit. I think Dr. Vijeta wants to say something. A very good morning to all the students who have taken MECP 101. The very fact that you are attending this workshop means that you are very serious about continuing with your project. My fellow colleagues have already mentioned everything about how a project should be done, what are the steps, what are the things that you have to be careful for. Based on experience, I just want to give few more guidelines. Firstly, see, project is a very important aspect of MA Economics. Like Professor Narayan Prasad sir told you that it is application of what you learn in MEC 109. So if you do it properly, after understanding the concepts, you are going to learn a lot how to apply whatever you are learning into real life scenario. But many times when project reports come to us, we have observed that they are more like an assignment. So there is a difference. In project, you have to apply whatever you have learned. You have to use some research tools. Okay, so it is different from assignment. You are not producing something. You are creating something. And like sir said, since it's just a MA level, you have to be very limited with your objectives also. Many times what happens is that we receive project reports directly. Project approved project proposal is not attached.
So like Parikh sir also told you, first step is to get your project proposal approved, because that tells us what you are going to do and how you are going to do. So if we have to make some suggestions, we can do that at that level only. And if you follow those suggestions, your report will turn out to be really good, and you can really score very good marks. Number two, even when many students submit their project proposal, we have observed that it is very vague. They have not clearly specified what are going to be the objectives, what is research methodology, how they are going to go about with the research. So please make sure that when you're submitting proposal to the faculty for approval, you are clarifying everything. It is what you're doing and how you're going to do it, along with a bit rationale of it. So please remember, try to produce something original based on what you have learned in other subjects of MA Economics. I'm repeating one more thing because it is very important. Please go through project guide very carefully. It is wonderfully drafted project guide, and it mentions everything. You will find sources also. You will find some part on methodology also, which methods you can use while analyzing. You will also find a very important thing where I have observed that most students make mistakes, which is references. Like my colleagues have already told you, that if you are using something from any other research, you have to quote that, you have to mention that. And you cannot just mention it randomly. There is a proper format for doing so. For example, I'm using one research paper. I have to know whether I have to put the article name first or the author name first. The format which has to be followed is mentioned in our project guide. Please go through that carefully. One more last point that I have to make before we can open for question answers is that when you start working on your project, please revisit our course MEC 109. You must have completed that already. You must have passed the exam also. But still, it is very good idea. It is better to revisit that course, go through it once again, so that you get an idea about what research is. And like I'm repeating myself, research project is different from an assignment. So please be very careful with that. Thank you. Amit sir. Yeah, thank you so much, ma'am, for your details regarding the different components of the projects. So now the session is open for the question answer. आप किसी जो भी स्टूडेंट्स की अगर क्वेरी आप लोगों की है, so please raise your hand so that we invite you one by one for your doubts or the further clarification related to the projects. आप लोग अपना hand raise कर सकते हैं so that we invite you one by one. Krishna, Mr. Krishna. Good morning. Yeah, good morning. जैसे मैंने सेकेंड ईयर में भी एनरोल कर चुका हूँ और फर्स्ट ईयर के लिए इस बार अपियर हो रहा हूँ, तो मुझे भी सबमिट करना पड़ेगा रिपोर्ट। कृष्णा, आपका क्वेरी क्लियर नहीं है, थोड़ा लाउडली बोलेंगे। एक्चुअली मैं फर्स्ट ईयर का जो टर्म एग्जाम है इस बार मैं अपियर हो रहा हूँ और सेकेंड ईयर के लिए मैंने एनरोल कर रखा हूँ, तो मुझे भी सबमिट करना पड़ेगा रिपोर्ट। नहीं, सेकेंड ईयर में एनरोल कब किया है आपने, और आपने क्या प्रोजेक्ट कोर्स को लिया हुआ है? हाँ, लिया हुआ है मैंने इसी बीच में, मतलब आज के टाइम में ही जो किया था मैं सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर अभी 2024 में फॉर्म सबमिट किया है आपने? हाँ जी। नहीं, पहली बार, एक मिनट, पहली बार आपने एडमिशन कब लिया है? स्टार्टिंग में, शुरू में फर्स्ट ईयर कब लिया था? जुलाई 22 में मैंने लिया था, लेकिन मैंने नहीं, जस्ट ए मिनट, जुलाई 22 और जुलाई 23? नहीं, जुलाई 22। हाँ, तो है आपके लिए प्रोजेक्ट करना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। ये जब आप अगर इसे ऑप्ट करेंगे तो ही प्रोजेक्ट, जैसा हमारे बारिक साहब ने बताया, प्रोजेक्ट आप MECP 101 अगर कोर्स आपने ऑप्ट किया होगा सेकंड ईयर के लिए तो ही करना है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, जब आप, जैसा कि मेरे कलीग विजेता ने बताया कि पहले आप MEC 109 का टर्म एंड एग्जाम देके पास हो जाइए। वो एग्जाम, वो पेपर अगर आप ठीक से देख लेंगे
और अगर आप प्रोजेक्ट करने में इंटरेस्टेड हैं तभी आप करिए। तो पहले जी, मैं कोर्स पूरा interested करो फिर, और जरूरी मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। है। हाँ, मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है, जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं दे सकता हूँ ना? नहीं, सबमिट करना जरूरी नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा है MECP 101, तो ही आप प्रोजेक्ट प्रपोजल दीजिए, अदरवाइज आप दूसरा कोर्स कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट इज अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी। ओके, नेक्स्ट हेलो, इज, या प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। सर मैंने जुलाई 2023 में सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है। मेरे पास 101 जो था वो MEC वो फर्स्ट ईयर में था, सेकेंड ईयर में MEC 109 है। तो मेरा तो असाइनमेंट तो इस महीने या नेक्स्ट मंथ सबमिट होकर फिर मुझे एग्जाम देना पड़ेगा ना सर? नहीं, एक मिनट, आपने जुलाई 23 में सेकेंड ईयर में लिया है एडमिशन, जी सर। तो आपके लिए पुराना वाला ही MEC प्रोग्राम ही वैलिड है। और सेकेंड ईयर में आपको, आपका इशू असाइनमेंट का है, प्रोजेक्ट का है? सर मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है ना इस हाँ, मंथ में। असाइनमेंट करने हैं तो आपको असाइनमेंट करना होगा। हमारे असाइनमेंट ऑलरेडी अपलोडेड है। ये असाइनमेंट 23 24 वाला असाइनमेंट आपको सबमिट करना है सारे कोर्सेज का। MEC जो सेकेंड ईयर के कोर्सेज हैं उसमें 4 कोर्सेज तो कंपलसरी हैं, जी और सर। 2 कोर्सेज आपको ऑप्शनल लेने हैं। ऑप्शनल में हमारे 5-6 कोर्सेज हैं, उनमें से कोई भी 2 कोर्सेज आप ऑप्ट कर सकते सर हैं। ऑप्शनल में मेरे पास है MGSC 009 और MWG 011। ठीक तो है। मुझे इन दोनों का भी असाइनमेंट बनाना था। तो ये दोनों असाइनमेंट आपको 23 24 के देने हैं। और एग्जाम कब, आप एग्जाम जून में देना चाहते हैं? जी सर। तो जून में देने के लिए तो अभी तक असाइनमेंट आपका सबमिट हो जाना चाहिए। शायद 30 अप्रैल है या सर 30 अप्रैल तक है सर। 30 अप्रैल है, तो जी। 30 अप्रैल तक तो आप सर अपने असाइनमेंट स्टडी सेंटर को सबमिट कर दें। उन्होंने बोला था कि मेल पे मैसेज आएगा और अभी तक मेल पे नहीं आया था। 2 बार मैंने विजिट भी कर लिया वहां पे। नहीं, ये मेल तो स्टडी प्रसाद सेंटर मेल कहाँ, का काम है। हाँ, स्टडी सेंटर कहाँ पर है आपका? सर ये शास्त्री नगर के पास कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कोई कॉलेज है, वहां पे है। वहां पे 2 बार मैं विजिट भी कर ली। उन्होंने बोला था 15 से 30 तारीख के बीच में मेल पे मैसेज आ जाएगा। नहीं, मेल पे किस चीज का मैसेज? क्या वहां पर लास्ट टाइम में ऑनलाइन जमा करा था उन्होंने आपका? जी ऑनलाइन सबमिट हुआ था सर। ओके, ठीक है। मैं एक बार भुवन है वहां पर जो असिस्टेंट है, मैं उनसे बात करके फिर आपको रिवर्ट बैक मैं कहूंगा। अगर नहीं गया है आप लोगों के पास, सो दे विल सेंड। हार्ड कॉपी जमा नहीं करते हैं वो? सर फर्स्ट ईयर में हार्ड कॉपी नहीं होता और मैंने विजिट किया था। उन्होंने बोला था कि इस बार भी ऑनलाइन ही होगा। और मेल पे मतलब लास्ट ईयर मेल पे मैसेज आया था, उस मेल पे ही हमें सबमिट करना था। और इसी वजह से मैं अभी तक रुकी हुई हूँ। और अगर 30 तारीख तक है तो सर कहीं लेट ना हो जाए। डॉक्टर रहमान आप हैं? एक हम लोगों ने वैसे जो हर स्टडी सेंटर का लिंक जो है या मोड ऑफ सबमिशन है, ऑलरेडी RC दिल्ली 2 की वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है। सो आई विल चेक एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू ड्यूरिंग द मीटिंग। ठीक है। नेक्स्ट, आयुषी त्यागी। यस, गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने प्रोजेक्ट कोर्स जो है मेरा 101 वो मैंने ऑप्ट नहीं किया है, तो उसके अलावा मैं नहीं कर सकती हूँ क्या प्रोजेक्ट? नहीं, अगर ऑप्ट नहीं किया है तो नहीं कर सकते। जो कोर्स ऑप्ट किया है वही कोर्स करना है फिर आपको। ओके। नहीं, पहले री रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको भरना पड़ता है ना कौन कौन से कोर्सेज आप ऑप्ट कर एक्चुअली रहे हैं। एक्चुअली सर ये मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ मुझे कोई भी प्रोजेक्ट वर्क भी करना है। आज जैसे ही आप लोगों ने मुझे बताया तो मैं अभी जानी हूँ कि 101 में हमारा प्रोजेक्ट वर्क था और वो हमें लेना था। एक्चुअली मैं करना चाहती हूँ मगर अब तो मैंने नहीं ऑप्ट किया है तो। नहीं किया है तो वो अब नहीं करना आपको, क्योंकि ये जब ऑप्ट नहीं किया है तो जबरदस्ती वो कंप्यूटर लेगा ही नहीं आपका कोर्स। नहीं नहीं सर, वो तो मैं आपकी बात समझ रही हूँ, बस मैं वही कंफर्म कर रही थी कि हाँ, अगर मैं करना भी चाहूँ तो नहीं होगा ना अब। नहीं करना चाहो तो बदलना पड़ेगा कोर्स, क्योंकि 2 ऑप्शनल कोर्सेज आपने ऑलरेडी भर दिए होंगे। अब ये जी चेक जी करना जी। पड़ेगा आपको। तो अगर बदलना है, वैसे तो अगर आपने कर दिया है तो कोर्स ही कर लो, क्योंकि अभी आप कहीं काम कर रहे हो क्या? एक्चुअली सर मैं साथ में MBA कर रही हूँ, तो मैंने वहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट वर्क किया, तो मेरा मन था कि मैं इकोनॉमिक्स में भी एक प्रोजेक्ट करूँ, बट तो पहले मन है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी।
नहीं, ये आपने प्रोग्राम गाइड नहीं पढ़ी होगी, नहीं तो हमने प्रोग्राम गाइड में दिया है कि कौन से ऑप्शनल है, कौन से कंपलसरी कोर्सेज हैं। तो ऑप्शनल में तो जो आपने कोर्स पढ़ा होगा वही तो आएगा। एक्चुअली ऑप्शनल में ये सब मैंने पढ़ा था, मगर प्रोजेक्ट का मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं था। कोई बात नहीं, अब आपने नहीं किया तो ये कोर्स कर लीजिए, और अगर बहुत इंटरेस्टेड है तो री रजिस्ट्रेशन वो सब्जेक्ट चेंज का फॉर्म भरिए, तब चेंज ये होगा। कि ये चेंज ऑफ कोर्स की ऑप्शन है, अगर आप रीजनल सेंटर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और एग्जामिनेशन फॉर्म भी सर मैंने फिल कर दिया है, हम्म। तो फिर उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? जैसे मान लो अगर मैं कोर्स अपना चेंज करा देती हूँ तो मुझे वहां भी कुछ चेंजेस कराने पड़ेंगे फिर? नहीं, वो पर्टिकुलर फिर थ्योरी का पेपर आपको नहीं देना होगा। इसमें मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ आरुषि को। हमारे इग्नू में एक सिस्टम है कि कोर्स वाइज रजिस्ट्रेशन भी होता है, कि आप खाली एक कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा कीन है अपना रिसर्च प्रोजेक्ट को लेकर, तो आप जुलाई सेशन में सिर्फ पर्टिकुलरली ये कोर्स MECPE वाला जो है 101 आप ले सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आपके पास वो ऑप्शन भी है कि आप कोर्स चेंज ना कराएं, अपना मास्टर्स डिग्री इन्हीं के साथ कंप्लीट कर लें, और एक अलग से कोर्स, सिर्फ एक सिंपल यही कोर्स कर सकते हैं। मैम, अलग से करने के लिए आप मुझे थोड़ा समझाएंगे अच्छे से? जी, हमारा प्रोस्पेक्टस पढ़िए, उसमें लिखा होगा कोर्स वाइज रजिस्ट्रेशन। तो आप उसमें देखिएगा, शुरू के पेजेस में आपको सब डिटेल मिल जाएगा किस तरह से करना है उसको। और हमारा कल से ही एडमिशन होगा उसमें, जो एडमिशन होता है वैसे ही होगा आपको। ओके मैम, और उसका ड्यूरेशन मतलब कितना रहेगा कोर्स का? Yeah, it would be minimum 6 months and maximum it would be 2 years. ओके, थैंक यू। और सर मुझे आप लोगों से, क्योंकि आप लोग बहुत एजुकेटेड है, मैं तो बहुत छोटी हूँ आप लोगों के सामने, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि अभी मैंने इकोनॉमिक्स में MA किया है, कर रही हूँ, अब इस ईयर तो मैं कंप्लीट कर ही दूंगी, और मैं MBA कर रही हूँ फाइनेंस में। तो इन दोनों के बीच में कोई ऐसा आप मुझे करियर बताएं जो दोनों को लेके मैं आगे बढ़ सकूं। कैरियर का ऑप्शन तो ये तो आपको तय करना है। अब आप किस फील्ड में जाना चाहती हैं ये भी चॉइस है, लेकिन अब MA इकोनॉमिक्स में आपने जो कोर्स किया है और MBA फाइनेंस किया है। जी, मैं कर रही हूँ एक्चुअली फाइनेंस। मेरा फर्स्ट ईयर अभी चल रहा है, सेकंड सेम है। फर्स्ट ईयर इस ईयर मैं कंप्लीट कर दूंगी, फिर मेरा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाना है अभी अगस्त में। देखिए, कैरियर तो बहुत सारे हैं, अब वो आपको कौन सा कैरियर पसंद है उस पर डिपेंड करेगा। क्या आप मुझे बताएंगे वो कौन कौन से करियर्स हो सकते हैं? एक्चुअली मैं जितना जानती हूँ, अगर मैं इकोनॉमिक्स को लेकर आगे बढ़ूं तो मेरा मन है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्जाम देना, और अगर मैं फाइनेंस में अगर मैं देखूं तो मेरा है बैंकिंग की तरफ जाना और कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर करना। तो अगर मैं इन दोनों को साथ लेकर चलूं तो ऐसा कोई ऑप्शन है? देखिए, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज बेसिकली मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स MA दो अलग अलग प्रोग्राम है, दोनों के अलग अलग जी। MBA है वो बेसिकली इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड माइक्रो लेवल पे, और इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है ओवरऑल इकोनॉमी है, माइक्रो भी है वहाँ। जी। तो वो डेटा एनालिसिस का है, आपका इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है, स्टैटिस्टिकल वर्क है, ये सब के लिए इकोनॉमिक्स ठीक है, और बाकी प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करने के लिए MBA ठीक है। एक्चुअली सर MBA में भी ऐसा नहीं है कि हम सारा मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हैं, कुछ पोर्शन हम इकोनॉमिक्स का भी पढ़ते हैं। जैसे कि अभी आप लोग बता रहे थे MEC 109 अबाउट रिसर्च, तो हमारा भी अभी जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मेरा सेकंड सेम चल रहा है, तो उसमें मेरा प्रॉपर एक सब्जेक्ट है बिजनेस रिसर्च का। तो जैसे आप सैम्पलिंग डिटेल में इन सब चीजों पे ये इंडिविजुअल इशू है, हम बाद में बात कर सकते हैं। अभी जो यहाँ डिस्कशन है प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज, क्वेश्चंस, इश्यूज हैं उस पर हम ज्यादा चर्चा करना चाहेंगे। ओके हाँ, थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच आयुषी। नेक्स्ट इज आक्षी त्यागी। Nisit. Good morning, sir. Yeah, please. Sir, I just wanted to ask if there was any incentive or any preference for primary or secondary data in our research. See, this is a good question. Actually, there is nothing like any preference. Generally,
because lot of secondary sources data is available. So students, because it is easily accessible, primary source data is little bit costly, time consuming, inconvenient also, because at individual level collection of data is not a free gift. You have to spend some more time, but they are not substitute to each other. It all depends upon what kind of issues or research questions you have identified for research. That will determine whether the data, if on that particular issue, if secondary data is available, go prefer secondary source of data. But many times both types of data are also used to investigate a particular issue, secondary source of data, and then to support or to strengthen the findings, even primary source of data is also collected. So I will not go into detail because that kind of treatment is not desirable for your level. This is very high level of research. My answer to your question is that both kind of data are useful. It all depends what kind of research issue is there and what kind of information is available from the secondary sources. If it's not available, go for the primary source of data. But both are useful. Okay, thank you, sir. Next is Muskan Fatima. सर गुड आफ्टरनून Yeah, good सर मेरा afternoon. क्वेश्चन ये है कि मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था एमए इकोनॉमिक्स में, तो मैंने असाइनमेंट अक्टूबर में सबमिट किए हैं, लेकिन मैंने दिसंबर में एग्जाम नहीं दिए, लेकिन मेरा अभी तक असाइनमेंट के मार्क्स नहीं आए। तो एक बार चैट बॉक्स में कहाँ पर आपने सबमिट करा है और अपना एनरोलमेंट नंबर दोनों अगर टाइप कर देंगे, सो वी विल फॉलो इट अप। ओके सर, मैं कर देती हूँ। एक स्टूडेंट की क्वेरी थी लक्ष्मीबाई कॉलेज की, तो ऑलरेडी हम लोगों ने उसमें चैट बॉक्स में वहाँ ईमेल आईडी है, तो ऑन दैट पर्टिकुलर ईमेल आईडी यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट्स। और डॉक्टर रहमान ने एक लिंक भी पेस्ट करा है जहाँ पर हर स्टडी सेंटर का हम लोगों ने वेबसाइट पे अपलोड करा है कि व्हाट इज द मोड ऑफ सबमिशन फॉर द असाइनमेंट फॉर टर्मिनेट एग्जामिनेशन जून 24। और अगर किसी स्टूडेंट कृष्णा कृष्णा कोई क्वेरी है आपकी? गुड आफ्टरनून सर। या रहमान, या प्लीज। सर मेरा एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन था सर। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आपने बताया सर कि the proposal would be submitted to the faculty only and all the approved academic counselor can be the guide for the project. My only query is there any limit for a particular academic counselor to supervise 4 students, 5 students? Because we have a large number of students in RC Delhi too. And subsequently, the second question is that, sir, if the academic counselor are approved as a guide, can be a guide, then can the student submit the proposal for approval to the guide, or it will only be directed to the faculty school, sir? These two questions, sir. The first question answer is normally we are not very particular about the number, but in normal cases 8 students are sufficient enough for a particular individual to become as a supervisor normally. Okay. But a situation arise that no counsel is available for the supervision, if this number can go. So far the second issue is concerned, faculty has to approve the proposal, not the supervisor. Through supervisor, because a person cannot, if one same person cannot be the supervisor as well as the proposal approval. So for the purpose of maintaining the quality, we have kept this with the economics discipline. Subsequently, we will think of that some set of counselors can be identified for approval also, but not right now. It will depend, because when we will come in the semester 4, a number of projects will increase. So that issue will be considered at that point of time. But right now, the approval of the proposal is to be made by the economics faculty at the IGNOU headquarters. Supervisor has not been given this मतलब मैं authority use नहीं करना चाहूँगा, this sort of thing. Okay, sir.
हाँ Why I asked that question, sir? Because of the number of students, sir. The academic, we have a limited academic counselor, sir. And right. every student is approaching the academic counselor. They say, sir, we have already filled up. We don't have any vacancy. So normally students are struggling between the study center, regional center, sometime in the headquarters. So that's why I asked, is there any fixed limit number that where they can? No, for that purpose, so far Delhi is concerned, we have given the freedom that any person who is actively involved in research in any institution, Yes, yes. apart from the academic council, can also be the supervisor. But in that situation, his biodata need to be enclosed so that we can also see whether the candidate has opted the right kind of person for the supervisor. So Okay. there is no boundary that Okay. only academic counselor. We have mentioned this in the program guide, in project guide, that any or in Delhi, a large number of research institutions are available. It may happen at the small places where there is no research institute, but so far Delhi is concerned, I don't find that this is a very tight situation. Okay, sir. Thank you, sir. किसी और पार्टिसिपेंट के अगर कोई क्वेरी है सो यू मे रेज योर हैंड Please अदरवाइज raise your hand regarding अंजलि academic issues more. या अंजलि Subject कुमारी related देन आफ्ताब academic रोशन issues. हाँ. अंजलि कुमारी सर मैंने फर्स्ट ईयर में वैसे मैं सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दूंगी इस बार जून जुलाई में लेकिन फर्स्ट ईयर में मेरा एक कोड रह गया था MEC 02 उसमें वो कंप्लीट नहीं हुआ था मतलब वो बैक आ गया था उसमें तो मैं इसी जून में उसका भी एग्ज़ाम दे सकती हूँ हाँ बिल्कुल दे सकते हो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म तो भर दिया ना उसमें डाल दीजिए ये कोर्स सर एग्जामिनेशन उसका फॉर्म में वो कोर्स डालना है एंड यू कैन अपीयर इन जून 2024 एग्जामिनेशन फॉर्म में मेरे ख्याल से भरा नहीं है इन्होंने अगर नहीं भरा है तो व्हाट यू डू 20 मई के बाद रीजनल सेंटर पे अप्रोच करिएगा तो उसमें कुछ एडिशनल फीस के संग वी में ऐड दैट पर्टिकुलर कोर्स सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी अगर वो अवेलेबल है तो हाँ कहाँ पे जाके फिल करना होगा सर रीजनल सेंटर पे आपको आना होगा ये जो IP स्टेट में इग्नो का रीजनल सेंटर है दिल्ली 2 ठीक है सर पहले आप ये ऑफलाइन बताइए, करना होगा ना सर आपने अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म अभी तक सबमिट किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है सर नहीं किया है? नहीं मैम नहीं उस तो अब आप अभी भी भर सकते हैं जून 2024 टर्म एग्जामिनेशन के लिए आप अपना जो भी आप कोर्सेज भरना चाहते हैं सेकेंड ईयर के वो भी भर सकते हैं कोई बैक का कोई फर्स्ट ईयर का कोर्स है वो भी आप भर सकते हैं तो अभी जो लास्ट डेट है इट इज अप टू 25th May विद द लेट फी ऑफ 1100 राइट मैम पॉसिबिलिटी है कि मैं लिंक के थ्रू जाके फिल कर सकती हूँ जी बिल्कुल अभी है पॉसिबिलिटी उसी लिंक में जाना है हमारे जो ऑनलाइन हमारा होम पेज पे आ रहा है आपके एग्जामिनेशन सबमिशन का फॉर्म जो है उस पर आप क्लिक करिएगा और लेट फी के साथ 1100 की लेट फी के साथ प्लस जितने भी कोर्सेज आप लेना चाहते हैं उसका 200 पर कोर्स है आप कर सकते हैं अपने सेकेंड ईयर के भी कर सकते हैं कोई फर्स्ट ईयर का बैक आके आप वो भी कर सकते हैं और आप जून में जुलाई में अपने एग्जाम दे सकते हैं ठीक है मैम थैंक यू जी अभी एक चीज मैं क्लियर आपसे करना चाहूंगा कि सेकंड ईयर का फॉर्म क्या आपने अभी जुलाई 24 के लिए जून के लिए भर चुके हैं या एक पेपर छूटा हुआ है आपका खाली सर फर्स्ट ईयर में मेरा एक पेपर छूटा है सेकंड ईयर का तो मेरे को अभी जून में देना ही है तो उसका मैंने अभी फिल नहीं किया है ओके ठीक है तो डॉक्टर शाइनी ने जो आपको बताया वो ऑनलाइन पे जाके आप लोग फॉर्म सबमिट कर सकते हैं ठीक है ओके सर नेक्स्ट इज आफ्ताब रोशन नमस्ते सर जी सर ये मेरा एक क्वेश्चन था कि एक तो मेरा जो सेशन है वो जनवरी 2023 का है और मैंने असाइनमेंट जो है वो अक्टूबर में सबमिट कर दिए थे और मेरे असाइनमेंट के भी मार्क्स नहीं आए हैं मार्क्स के लिए दो चीजें हैं कि या तो आपके स्टडी सेंटर पे इवेलुएट होकर नंबर रीजनल सेंटर नहीं आएंगे अदरवाइज एक बार आपने ग्रेड कार्ड में देखा है असाइनमेंट ट्रांसमिशन स्टेटस में हाँ सर वो वहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है ओके तो आप एक मेल rcdelhi2@igno.ac.in पे जो असाइनमेंट की रिसीट होगी आपके पास जी उसको लगाते हुए भेज दीजिए अलॉन्ग विद कब आपने किस मंथ में और कहाँ पर सबमिट करा है और सर जो रीजनल मतलब हमने ऑनलाइन सबमिट किया था हमारे पास लिंक आया था क्योंकि कॉलेज जहाँ से हमें सेंटर मिला स्टडी सेंटर मिला हुआ है उन्होंने डायरेक्ट मतलब वैसे हार्ड कॉपी नहीं दी थी हाँ तो जो भी पूरा डिटेल्स है ये पूरा रीजनल सेंटर पे मेल के थ्रू आप भेजिए
ठीक है। अच्छा, और सर सेकंड ये है कि मैंने अभी मेरा जनवरी का सेशन है, तो मैंने दिसंबर में एग्जाम्स नहीं दिए थे, तो अब मैं जून में दूंगी। मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया है ठीक है। और ठीक। सेकंड ईयर का भी एनरोल कर दिया, सेकंड ईयर की फीस भी सबमिट कर दी है। ओके। और एक और चीज ये थी कि जो अभी मैम ने बताया था, अभी एक आयुषी थी, उन्होंने पूछा था कि वो जो एक प्रोजेक्ट वर्क है उसको हम अलग से भी कर सकते हैं। अगर मैं ये 2 साल का अपना मतलब मेरी मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद भी क्या मैं 6 मंथ के लिए कर सकती हूँ? मैम ने ड्यूरेशन बताई थी ना 6 मंथ की। जी आरुषि, इग्नू में जितने भी कोर्सेज ऑन ऑफर हैं, आप बिल्कुल पूरा प्रोग्राम मत करिए। आपको कोई भी कोर्स आपको पिक करना है, आप कर सकते हैं। ये फैसिलिटी इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए या किसी के लिए भी है कि आप किसी भी प्रोग्राम का कोई 1 कोर्स, 2 कोर्स, 3 कोर्स जितना चाहे आप कर सकते हैं। और वैसे भी अब यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी शुरू किया है स्कीम। तो जो भी आप क्रेडिट अर्न करेंगे अपने मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, प्लस इन एडिशन टू ऑल दीज डिग्रीज, अगर आप करना चाहें तो जो भी आप कोर्स वाइज पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसका सिंपल एडमिशन का प्रोसीजर जैसे आप करते हैं बिल्कुल वही प्रोसीजर है, बस यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट ओनली वन कोर्स। So please go through our prospectus for details, and we'll also get to know how to go about it. Okay, ma'am. Thank you. Yeah. नेक्स्ट इज हंसा कुमारी। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। सर मेरे पास एमईसी फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर में नहीं है, तो अभी इसका प्रोजेक्ट असाइनमेंट जो आप बोल रहे हो बनाना है। दोबारा से रिपीट करेंगे, क्वेरी कुछ क्लियर नहीं है, आपकी आवाज आ रही है। सर मेरे पास एनईसी फर्स्ट ईयर में था 101, सेकंड ईयर में नहीं है ये। नहीं, MEC 101 एक कोर्स है कंपल्सरी। ये जो प्रोजेक्ट है MECP 101 है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? एमईसी की नहीं, प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं या दूसरे कोर्स की? दूसरे कोर्स की, जो फर्स्ट ईयर में हमारे पास एक सब्जेक्ट था ना एमईसी 101। हाँ है, हाँ। ये वही है या दूसरा है? सेकंड ईयर में नहीं है मेरे पास ऐसा कोई एमईसी की कोई कोर्स। नहीं, ये देखो, पहला जो कोर्स है वो कंपल्सरी कोर्स है, वो तो सबको करना ही है। ये जो बात हम प्रोजेक्ट की कर रहे हैं उसका कोर्स कोड है MECP, ध्यान रखिए, P, MECP 101। ये सेकंड ईयर में ऑप्शनल कोर्स है, चाहे तो आप लें चाहे तो न लें। और अगर लिया है तो फिर प्रोजेक्ट कैसे करना है इसके बारे में हमने चर्चा की है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इज दिव्या कुमारी। सर एक इंक्वायरी होती, बहुत बार हमें डाउट होता है तो किसी टीचर का नंबर नहीं है या कोई ऐसी लिंक जिससे हम हमारी इंक्वायरी पूछ सके। हंसा, बेसिकली देखिए, आपकी जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं उसी में आपको डाउट्स क्लियर करना है, कोई अलग से कोई नंबर टीचर्स का नहीं होगा। तो आपके स्टडी सेंटर पे आप कांटेक्ट करिए, वहां पर या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जो भी सेशंस होते हैं, सो प्लीज गेट इन टच विद दोज सेशंस ओनली। ओके सर। दिव्या कुमारी। ये हेलो सर, गुड आफ्टरनून। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे मैंने जनवरी 2023 में एनरोल किया था फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए, जिसके लिए मैंने दिसंबर में एग्जाम दे दिया था। ओनली 2 पेपर मैंने दिए थे, रेस्ट ओवर मैं अभी जून में दूंगी। एंड जो मैंने असाइनमेंट थे वो सारे ही सब्जेक्ट के सबमिट कर दिए थे, लेकिन मैंने पेपर 2 ही का दिया था दिसंबर में। तो जो बाकी जो मैंने पेपर नहीं दिए हैं उनकी जो असाइनमेंट मार्क्स हैं वो कंसिडर होंगे या फिर मुझे दोबारा से वो देना पड़ेगा? असाइनमेंट एक बार क्लियर कर लिए हैं आपने, सारे जी सबमिट कर लिए, वो दोबारा देने की जरूरत नहीं है। उसके मार्क्स आपके चढ़ जाएंगे, फिर आपको खाली पेपर जो नहीं दिए हैं वही देने हैं। जी सर। और सर जैसे अब जून में मैं जो रेस्ट ओवर पेपर्स है वो दे दूंगी। वो भी इन दे सकते केस, हाँ जी, इन केस अगर सपोज मेरी किसी में बैक या फिर नहीं, मैं नहीं दे पाई अगर 1-2 पेपर या 1 पेपर जो भी है, तो मैं वो फिर सेकेंड ईयर के पेपर्स के साथ दे सकती हूँ? बिल्कुल दे सकते हो। अच्छा, ओके सर। एंड सर ये जो असाइनमेंट मार्क्स आपके जो अभी इश्यूज आ रहे हैं कि नहीं, एक चीज ध्यान रखो, आपने जी जनवरी 23 का मतलब है पुराना वाला कोर्स MA इकोनॉमिक्स का कर रहे हो, तो आपको मैक्सिमम 4 साल अवेलेबल हैं। यानी जून 23 में लिया है आपने, तो 4 साल हो जाएगा 27 में। जी मेरे ख्याल में जून 27 तक हो जाएगा।
अगर जी उसके बाद हुआ तो ये आपको फिर से दूसरे प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, नए वाले में। नए वाले में झंझट ज्यादा है, पुराना हाँ वाला जी, हाँ आसान जी। है। इसलिए नहीं सर, वो मैं लिंक पूरी नहीं कोशिश, करना, जी लिंक जी, नहीं नहीं सर, करना, उसको टाइम लिमिट भी पूरा कर लेना। जी सर। एंड सर, जो अभी आप इश्यूज आने से आपने कहा, तो उसी जो आरसी दिल्ली आप बता रहे हो, उसी में मेरे को असाइनमेंट का अगर सपोज अपलोड नहीं हो रहे मार्क्स, तो उसी में मुझे शेयर करना है डिटेल्स, राइट? अगर कोई भी इश्यू, देखिए सबसे पहले आपको अपने स्टडी सेंटर पे कांटेक्ट करना है। जी। अगर वहां पर रिजॉल्व नहीं होता है, देन प्लीज अप्रोच द रीजनल सेंटर। Okay, sir. And sir, one more thing, like, can you just tell me, like, the scope of this economic subject which we are studying right now? Like, in the future, like, हमारा next step क्या हो सकता है? Like, अगर हम थोड़ा, like, हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया दिसंबर में, then what can be the next step if you want to move in the ministry sector or something like that? नहीं, नेक्स्ट स्टेप तो हम यहाँ नहीं बता सकते। इतना ही बता सकते हैं कि अब आपका इंटरेस्ट किस एरिया में, फिर उस एरिया में ट्राई करो। रिसर्च में जाना है रिसर्च में करो, किसी जॉब के लिए जाना है जॉब के लिए अप्लाई करो, किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना है प्राइवेट सेक्टर के लिए करो। ओके सर। एंड सर, जो सेकेंड ईयर जो अपने एमईसी पे अंडरस्टूड कि ये एमईसी 1 के लिए प्रोजेक्ट है, लेकिन जिन्होंने बाकी ऑप्ट किए हैं तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना ना, लाइक प्रोजेक्ट वर्क, हाँ, जिनके पास एमईसी, राइट? ये कंपलसरी कोर्स नहीं है, ऑप्शनल कोर्स है। और मैं तो प्रेफर करूंगा कि जो बहुत शार्प बच्चे वही करें, जो जी ऑलरेडी वर्किंग है उनके लिए है। ये जी कोई ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट करना एक हॉबी है, नहीं तो तुम राइट। फंस जाओगे, बार बार लिखते रहोगे, हम बार बार रिजेक्ट करते रहेंगे। या तो ये दी तो अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि जो बच्चे क्रिएटिव माइंड के हैं, काम करना चाहते हैं, उनके लिए है। अब उस ओके चक्कर में हर एक करने लगे और फिर कर नहीं पाए तो उसका कोर्स प्रोग्राम अटक जाता है। जी इसलिए जो सामर्थ्य है, और हर आदमी अपने विषय में जानता है कि मैं कितना कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, इसलिए जी सर, ऑप्शनल में रखा है। ठीक है। जी सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस हम लोग और लेंगे। मिस्टर रवि कुमार, देन रवि कुमार, देन JR रेग्मी। हेलो, यस गुड आफ्टरनून सर। या गुड आफ्टरनून। सर, मैंने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर के जो अपने असाइनमेंट है वो सबमिट किए थे ऑनलाइन। मेरे पास लिंक आया था, मैंने उस पर वो सबमिट कर दिए थे। बट इस बार मुझे ना कोई लिंक मिला है, ना कोई मैसेज, कुछ भी नहीं मिला है। नहीं, मैंने देखिए अपना अभी मैंने एक वेबसाइट का लिंक RC दिल्ली 2 का शेयर करा है कि क्या मोड ऑफ सबमिशन है। हाँ सर, उसके अंदर उन्होंने ऑनलाइन ही दिया है। मैंने अपना स्टडी सेंटर कोड भी डाला है उसके अंदर 29062। सर, इनका कोई इस बार इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। लास्ट ईयर तो 3-4 बार इन्होंने मेल किया नहीं, था जो कि ये। देखिए पहली बात तो ये, जो RC दिल्ली 2 की वेबसाइट पे ये कोड है कि नहीं है, ये मुझे बताइए। हाँ जो जी अभी सर, कोड है और उसमें ऑनलाइन लिखा भी हुआ है। बट उसमें ना तो डेट वगैरह मेंशन है, नीचे का पूरा ब्लैंक है उसमें। मतलब उसमें मोड नहीं है कि ईमेल से भेजना है या कोई लिंक पे भेजना है? नहीं, मोड ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट ऑनलाइन दिया हुआ है सर। जैसे नहीं उसमें नहीं, ऑनलाइन तो है, लेकिन कोई कोई गूगल फॉर्म का कोई लिंक या फिर ईमेल आईडी कुछ नहीं दिया हाँ हुआ। सर, लिंक भी मेंशन है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है फिर? सर, मुझे अभी पता चली है चीज, क्योंकि लास्ट ईयर तो सर इन्होंने मेल किया अभी था, देखिए, मैसेज भी दिया बेसिकली था एज इवन। ए डिस्टेंस एजुकेशन आप इस चीज को समझिए कि आप लोग जो हमारी वेबसाइट या सोशल मीडिया के जो पेजेज हैं उसको टाइम टू टाइम विजिट करिए। हम लोग फेसबुक पे भी डाली है, RC दिल्ली 2 पे भी डाली, ट्विटर पे भी डाली है। तो आप ये विजिट करिए। जरूरी नहीं कि स्टडी सेंटर से हमेशा आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। तो थोड़ा सा एज ए स्टूडेंट प्रोएक्टिव रहिए। आप वेट मत करिए लास्ट तक, हम वेट करते रहेंगे। ठीक है, ओके सर, नेक्स्ट थैंक यू सो मच सर। लास्ट क्वेश्चन जो है मिस्टर JR रेग्मी, JR रेग्मी, देन किरण यादव लास्ट। किरण यादव, हेलो सर एंड मैडम, गुड आफ्टरनून। या गुड आफ्टरनून। सर, मेरे को दिसंबर 24 में सेकेंड ईयर का एग्जाम अपेयर करना है। तो MECP 101 के लिए जो रिसर्च प्रपोजल है वो मेरे को कब तक सबमिट करना होता है? नहीं, एक्चुअली आपको ऐसी कोई डेट नहीं है। आपको एग्जाम में सेकेंड ईयर में अपियर हो रहे हो? जी सर, दिसंबर 24 में सेकेंड ईयर में अपियर हो रहा हूँ। हाँ, तो आपने MEC 109 कोर्स पढ़ लिया है कि नहीं? MECP 101 के लिए रजिस्टर्ड किया है सर मैंने। नहीं, मतलब मेरा जो क्वेश्चन है पहले वो बताओ। MEC 109 रिसर्च मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, आपने वो कोर्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है सर। तो पहले वो पढ़ो, तभी आप प्रपोजल बना पाओगे।
समझ गए? बिना पढ़े कैसे प्रपोजल बन जाएगा? नहीं और नहीं, वो तो वो तो पढ़ेंगे, जैसे सबमिशन की कुछ डेट है कि ऐसा कुछ, सबमिशन इसलिए पूछना सर। कोई नहीं है आपका प्रोग्राम। इनिशियल एडमिशन आपने कब लिया था? इनिशियल एडमिशन जनवरी 23। जनवरी 23 में। तो अभी आपके पास टाइम है, पहले कोर्स जी पूरा सर। करो, दिसंबर में ये कोर्स दे लो एग्जाम, फिर आप ओके जनवरी में सर। सिनॉप्सिस बनाओ। जनवरी में कोर्स के एग्जाम देने के बाद तैयार करो, अभी आपके पास टाइम है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, दिस इज ए वेरी ब्रॉड क्वेश्चन एक्चुअली कि वो जो जून एंड दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट 1 महीना पहले सबमिट की जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि जून टर्म एंड एग्जामिनेशन में इवेल्युएशन होने के लिए मई 31 तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हो जाना चाहिए, तब जाकर आपका ये जून में सबमिट होगा। ऐसे दिसंबर 24 में अगर कोई एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए नवंबर 30 तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो भी रिसीव होता है वो सब दिसंबर में इवेल्युएशन के लिए भेजा जाता है। नहीं बारिक साहब, इनका क्वेश्चन प्रोजेक्ट प्रपोजल का है। नहीं, मैं ये सारे नहीं, प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए तो वो अलग है। हाँ, लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मान लीजिए कि वो कई स्टूडेंट सबमिट करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड वो 6 महीना 7 महीना तक सबमिट ना होके रह जाता है। वो बार बार क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखा नहीं रहा है कहीं पे और इवेल्युएशन हो नहीं रहा है। तो उसका एक कट ऑफ डेट है नवंबर 30 एंड मई 31। जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मई 31 तक रिसीव होती है एससीडी में, वो लोग दिसंबर में उसको इवेल्युएशन के लिए भेज देते हैं। और जो भी नवंबर 30 तक रिसीव होती है वो सारे रिपोर्ट्स वो लोग दिसंबर में भेज देते हैं इवेल्युएशन के लिए। Okay, thank you sir, got it. So now we are coming to the end of the meeting. Sir, और कोई पॉइंट ऐड करना है? मेरे ख्याल में सभी पॉइंट्स ऐड हो गए, बस इतना ही है। मैं लास्ट में यही कहूंगा कि प्रोजेक्ट ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अभी कम से कम पुराने प्रोग्राम में, नए में सिर्फ 2 ग्रुप के लिए कंपलसरी होगा, बाकी में वहां भी ऑप्शनल है। इसलिए प्रोजेक्ट को सोच समझ के लेना चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड है और आप सोचते हैं कि नहीं मुझे कुछ चीजें एनालाइज करनी है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन मन में आते हैं, तो जरूर प्रोजेक्ट करिए। हम डिस्करेज नहीं करना चाहते, लेकिन प्रोजेक्ट करना है बस ऐसे ही इसके लिए, जैसे और कोर्स है, जैसा कि मेरी कलीग विजेता ने बताया, ये असाइनमेंट नहीं है। प्रोजेक्ट इज ए क्रिएटिव एक्टिविटी और वो तभी आप ऑप्ट करो, अदरवाइज उसको ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है। और वो टाइम से बता ही दिया है पहले, लेकिन प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने से पहले ये जरूर है कि आप MEC 109 कोर्स को ठीक से पढ़ें। उसमें बहुत सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। यस, और एक बात कि MECP 101 एक फुल पेपर है, फुल कोर्स है 100 मार्क्स का। तो आप जैसे MEC 101 या 109 या 102 जैसे एक फुल कोर्स आप करते हैं, तो MECP 101 के लिए भी उतनी एफर्ट्स की जरूरत है। ये एक असाइनमेंट नहीं है कि आपने 2 दिन या 4 दिन या 15 दिन बैठ के आपने उतना मेहनत करके आपने सोचा कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाएगा। दिस इज ए एटलीस्ट यू हैव टू हैव सम 5 to 6 months। अगर आप 5-6 महीना डिवोट करेंगे तब जाकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट हो पाएगा। आपके एक पूरा एक कोर्स का जितना मेहनत जरूरत है उतनी मेहनत आप इसमें भी डालिए। Dr. Vijeta, anything you would like to add? No, I agree with Professor Barik. But if you do it seriously, trust me, you will learn a lot. Because in other subjects, you are just understanding what is. But then its implication in real life will only be known through project. So if you take it, you will enjoy it a lot. But do it seriously. It will help you in further studies also. Yeah, thank you so much. So now we are coming to the end. I think broadly यही कि जो लोग आगे अपना रिसर्च के लिए प्लान कर रहे हैं या करियर टीचिंग में प्लान कर रहे हैं, जिनको PhD के लिए इंटरेस्टेड है, तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट्स करने चाहिए क्योंकि इनका आगे रिसर्च में भी काफी मदद करेंगे। So now we are coming to the end of the meeting. So I request my colleague Dr. Meena Singh to kindly propose a formal vote of thanks. Dr. Meena Singh.
Thank you, sir. Thank you, sir, for giving me this opportunity. I am Meena Singh, Assistant Regional Director, Regional Center Delhi 2. मैं अपनी तरफ से और इस रीजनल सेंटर के पूरे परिवार की तरफ से डॉक्टर बनिक एंड डॉक्टर नारायण प्रसाद सर एंड डॉक्टर विजेता बनवारी जी को जो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने इतना डिटेल प्रेजेंटेशन दिया एमएससी प्रोग्राम के बारे में, चाहे वो कोर्सेज हो, कंपलसरी कोर्सेज हो, प्रोग्राम सिनॉप्सिस हो या प्रोजेक्ट हो, और निश्चित रूप से इस जो पूरा वर्कशॉप आज का है उससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको, क्योंकि ये नया अभी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और निश्चित रूप से उनको बेनिफिट मिलेगा और वो आगे इसमें प्रोसीड कर पाएंगे। हमारे जो हमारे विद्यार्थियों को भी विशेष धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन फॉर दिस वर्कशॉप। अगर हमारे विद्यार्थी ना हो तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो ये प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए हैं आज अभी, आप उनको भी ये जो इन्फॉर्मेशन इस प्रोग्राम के दौरान शेयर किया गया, आप उनको भी बताइएगा। आप अलग अलग ग्रुप से, चाहे वो काउंसलिंग के लिए हो या कोर्स वाइज जो व्हाट्सएप ग्रुप से उससे जुड़े हैं, आप उसमें भी ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करिएगा। और ये भी बताइएगा कि ये प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किया है और हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर अपलोड भी किया जाएगा। तो आप उसके जो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे इस लाइव सेशन को नहीं सुन पाए हैं, वो वहाँ पे जाकर दोबारा से देख सकते हैं। मैं माय हार्टफुल थैंक्स टू माय कलीग्स डॉक्टर शाइनी दुग्गल, डॉक्टर रहमान, डॉक्टर रीटा, and my special thanks to our regional director Dr. Amit sir, under whose guidance this program was conducted. So thank you so much everyone. Thank you. Namaskar. So now I you, thank sir. to RD Dr. Srivastava and his colleagues for arranging this beautiful program. I think you have shown the proactive role, because other day we discussed and you have implemented it. Yesterday I have sent a mail to Director RSD regarding this credit mapping of the course. Yes, sir. We got it, sir. You will get the. Yeah, we received it, sir. So that will be helpful because Yes, so many sir. queries come for the credit transfer. We will share the recording with all the RCs also. Today we will upload on the YouTube channel and with to the other RC for sharing with the MEC students. Right. This will be a good initiative. Okay. Thank Thank you. you, sir. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you.